ये सो अब ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सारा जो है रिपो में जो भी कोड था ये वो आ रहा है। मैं इसको HTML का कोड है, तो इसे चलाने के लिए जो है एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ। सर्वर की स्पेलिंग है, ठीक है। ये मेरा सर्वर लाइव सर्वर आ गया। मैं जैसे ये एक्सटेंशन डाउनलोड पे लगाइए, और ये बहुत फास्ट जो है ये इंस्टॉल हो भी गई है, ठीक है। तो अब मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ। तो जस्ट राइट क्लिक, ओपन इन सर्वर, और अब जो है इतनी फास्ट जो है ये रन कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूंगा तो जो है वो भी फास्ट जो है रन हो रही होंगी। डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, कि आपका इंटरनेट कनेक्शन किस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरी वेबसाइट जो है उसका जो है एक सर्वर बन के आ गया। तो इस तरह से जो है आप इस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बहुत फास्ट चलता है। जहाँ तक मुझे HTML वगैरह इतनी ज़्यादा खास नहीं आती, मैंने मालूम किया, तो वो बताते हैं कि भाई वो थोड़ा सा वेबसाइट जब आप लाइव सर्वर के थ्रू चलाते हो तो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन विजुअल स्टूडियो इधर जो कोड स्पेस के अंदर जब भी आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर जो है आपका टाइम जो है बहुत बच रहा होता है, ठीक है। बस आपको रिपो खोलनी है, रिपो के अंदर आपका कोड डालना है, और उसके बाद जो है आप उसे यूज़ करना है, ये टाइम लगता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत फास्ट काम हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि हम जो है इसको जो है, लेट मी ओपन माय गिटहब अगेन। ठीक है, अगर मुझे किसी, ये तो थी मेरी रिपोजिटरी, अगर मैं किसी और की रिपोजिटरी खोल रहा हूँ और उसके अंदर जो है मैं चेक कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है कोड स्पेस के थ्रू मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो है उसके कोड पे चले जाऊंगा। मैं फिर से शकील भाई के कोड पे जाऊंगा, ठीक है। ये वाला चेक कर लेते हैं, आज नया चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप यहाँ से आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं या हैकटूबर पीस कर रहे, हैकटूबर पीस में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आप इधर से जो है गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू जो है कोड जो है वो आप अपने इन्वायरमेंट में लेके आ रहे थे, या आप गिट के थ्रू लेके आ रहे थे, ठीक है। लेकिन आप जब इसके साथ देखेंगे कोड स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, आप जब इधर क्लिक करेंगे क्रिएट अ कोड स्पेस, तो हम इधर क्लिक कर देंगे, और अब हमारा जो है कोड स्पेस जो है वो क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। ओके, सो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और फर्दर मोर जो है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि जब भी आप कोड स्पेस के लिए मैंने बताया कि ये जो है ऑफलाइन जिस तरह से इंटरनेट के थ्रू वर्क करता है, तो ऑफलाइन होके तो आप जो है कोड स्पेस को चला ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मान लो कि अब जैसे ये कोड स्पेस चल रहा है और चलते चलते मैंने कोड चेंज किया और चलते चलते इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है। लेकिन फिर आता है कि कोड स्पेस वहाँ चलेगा नहीं चलेगा, आप उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो कोड में, ठीक है। वो उस टाइम पे सेव नहीं हो रही होंगी, लेकिन जब इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो वो सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप उस टाइम पे रन नहीं कर रहे होगे ना, पुश कर रहे होगे इंटरनेट, जब आपके पास नहीं होगा तो वो कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर कोड स्पेस के अंदर है कि आप ये जो है इंटरनेट के थ्रू ही जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम जो है एक्सटेंशन एक डाउनलोड कर लेंगे। एक्सटेंशन कौन सी थी, लाइव सर्वर। चैट प्लीज बंद कर दें, ठीक है। तो ये मैं सर्वर जो है ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये चुटकियों में जो है इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर जो है हम ये देखें इंस्टॉल हो भी गई, और अब जो है हम इसे चला के देख लेते हैं। देखें, ये शकील भाई ने किसी टीवी बनाई हुई है लेफ्ट सेट। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये वाली देखो, आप वो वाली क्यों देख रहे हो।
तो सॉरी शकील भाई, मेरे सामने वही पोर्टफोलियो नजर आई तो मैंने वही कोड कॉपी कर लिया। ओके, ये वाली ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। ओके ओके। तो इस तरह से जो है आपका पूरा कोर्स पे जो है वो काम कर रहा होगा। ये मैंने जो है HTML के कोड के लिए यूज़ किया, आप इसे जावा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे पाइथन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं आप। जो भी विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं ना, वो आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। Let me share the presentation again. Download. Yeah. So if you have any question on that, you can ask. मैं जो है वापस से रिपीट कर दूंगा कोर्स पेज के हवाले से, या आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। या क्विज जो है वो सारा ऐसे में से ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से सुनना है। इसके बाद वॉच पार्टी है, तो वो आपको अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, तो जिसने ये अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है, तो सेशन खत्म का होगा। उसके बाद हम जो है गिटहब की वॉच पार्टी देखेंगे, और उसके बाद जो है हम एक काहूट करेंगे, उसके बाद अटेंडेंस होगी और ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस सेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है गया। ठीक है, ओके। सो अगर किसी को कोई और सवाल है, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, गिव सम रिएक्शन। ठीक है, तो हमने देख लिया ये किस तरह से जो है कोड स्पेस काम करता है। ठीक है, अब हम जाके देखेंगे कि भाई अ, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गिटहब यूनिवर्स का। तो ध्यान रहे, जितने भी क्वेश्चन है ना, आधे से ज्यादा वो गिटहब यूनिवर्स पार्टी से ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। Jameel, can you please confirm that my screen is visible or not? तो आई विल, तो ये मैं जो है वाश पार्टी जो है वो जो मैं चला सकूं। ओके, नाउ एंजॉय। And I'm a developer. And there's nothing better, nothing more energizing to me than being in a room full of developers. Like so many of you, through every stage of my life, my greatest passion has always been to build with code. It started in my childhood
writing simple programs in BASIC. And then in university, I was using SUSE Linux and Emacs. In my mid-20s, I was working in an automaker, and it was Windows PC and Visual Studio. And now, today, I think I'm still in my late 20s, it's all on GitHub. It's now a code space, spinning up on my iPad, even when I'm at the airport. So much has changed, and since the rise of the internet, open source has been the engine of it all. Open source powers the world, and even those that didn't like open source to begin with are now on board. Companies, large and small, are using GitHub side by side with the open source community to build their own products and bring their big ideas to the world. And it's all of you together that have fueled this global economy. Now let me share something very special. 10 years ago, for the very first time, we published the Octoverse and reported just 2.8 million developers on GitHub. 2.8 million. A year ago, we were at 73 million, and I'm more than thrilled that as of today, now 94 million developers call us their home. But despite how fast software development has advanced, despite how much we have all grown, how much GitHub has grown, there's even greater change just ahead. I believe we have arrived at the most significant turning point in the history of software development. And the past few years have made it clear we now live in a world fully eaten by software. Every day is punctuated from beginning to end through our interactions with software. From the moment in the morning your alarm goes off, to your commute and your day at work, and maybe you don't even have a commute anymore, to the second you set your alarm again to go to sleep, you cannot escape using software. And building, running, and maintaining all the software for the world has never been more complex. As a developer, you can't just build a great product anymore. You have to do it securely. You have to do it fast. And you have to build 100 times a day. And in all of this, developers are still expected to deliver the best creation every single day. And as a developer myself, having to do all this work and stringing together or self-hosting all my own tools, sure as hell isn't something that I want. It's not solving my problems. It's not putting the developer first. We are at a breaking point, and it's time for a change. It's time to iterate and build a new developer experience. And it's no longer about how we can equip developers with the tools to do more for the sake of doing more. Now we must equip developers for everything they need to be at their best and to be happier. Right? That's what we want, be happy. Because developers do their best work where they can actually enjoy the work they want to do. When they have innovations that take the weight off, not add more, and when they have one integrated platform to do it all. One place that enables the flow state where the magic happens. And as the home of all developers, we have made it our mission to build this one integrated platform where developers can do it all. And it all starts with code. Welcome to GitHub Universe 2022. All right. Ever since we launched Copilot, it's helped redefine productivity for millions of developers by introducing them to the magic of AI assistance. For example, instead of us searching the web for a complicated regular expression, we can simply type a comment
that describes what you need and let Copilot do the rest. Or if we wanted to send a text message with Twilio, Copilot can help us generate the entire function that calls it, even if you've never used this API before. But the thing that amazes me the most is just how good Copilot is at understanding context, sometimes when you least expect it. Check this out. Here, we have a P5.js canvas, and as we press tab, Copilot helps us to draw a green house with a red door and a blue roof with 2 windows. But like, where did these specific colors even come from? If we scroll to the top of the file, we'll see that we wrote a comment describing the colors of each of these objects. Nothing gets past Copilot. This sort of behavior is why we refer to Copilot as an AI peer programmer, because its understanding of natural language and code gives you way more than just a productivity boost. It helps you to focus on the business logic over boilerplate and discover ideas you might not have otherwise considered, all from the comfort of your editor. Copilot is available now, and it's being used by hundreds of thousands of developers every day. And if you're a verified teacher, student, or maintainer of a popular open source project, it's completely free. In fact, roughly half of Copilot users receive Copilot for free as a result of this program. And as more developers have adopted Copilot, we've been happy to see how impactful it is in practice. For example, among developers who are using it with Python, aka my Pythonistas, 40% of the 40% of the code they write was actually synthesized by Copilot. We also ran a study with 95 developers, and we split them into 2 groups, and we asked everyone to write an HTTP server. And to our surprise, the group that used Copilot was able to complete the task 55% faster than the group that didn't. But beyond the developer excitement, we've also heard loud and clear that companies want an easy way to purchase Copilot for their entire team. So we're excited to bring the benefits of Copilot to every organization with the release of Copilot for Companies coming this December. This will enable you to manage licenses and policy from a central location using your existing GitHub organizations. So whether you prefer Visual Studio Code, IntelliJ, or Vim, developers and students alike are experiencing the amazing benefits that Copilot and AI assistants can provide. And we can't wait for you to try it out as well. GitHub is committed to ensuring that Copilot is truly available for everyone. So I want to give you a sneak peek of something we've been working on that takes the next step towards this goal. Watch this. Hey, GitHub, let's write some code. Import a graph plotting library. A function to analyze the sentiment of text with a free web service. Change it to return a Boolean. A function to plot an array of Booleans as a pie chart. An array of example text. A function to put it all together. Call main. It's behind, sorry. Call main. Hey, GitHub, run program. And that was Hey, GitHub. With the power of your voice, we're excited to bring the benefits of Copilot to even more developers. GitHub is renewing its vision to be the home for all developers, and this is just one of the many steps we'll be taking to make that a reality. Hey, GitHub is an experiment, and we'd love to get your feedback.
So sign up now to get access. Hey GitHub, drop the beat. With the new GitHub issues, planning and tracking is at the core of how high-performing development teams operate. And at GitHub, we believe developers deserve a planning tool that's centered around them, one that seamlessly integrates with their existing workflows, and more importantly, something they actually enjoy using. That's why we've enhanced projects in GitHub issues to be developer-first and truly adaptable. Here's a product backlog, where several teams across the product are working together to ship multiple features. Each view in this board shows a different perspective and is adaptable to the needs of whoever is using it. Our sprint planning lives as a board view, so we can visualize how work flows from one week to the next, while scope gives us a table view to quickly see items in every release stage. But what if we want to see how items track across dates? Previously, you'd have to leave projects and copy start and end dates for work into a spreadsheet or other tool. But today, we're introducing the private beta for Roadmap View, a native way to keep your stakeholders up to speed on what's being worked on, what's next, and how those items span across time. And you can even update your view from month to quarter to year. So as we dive into one of these features, you can see it's broken down into scopes using task lists. For this feature, we have 3 task lists: scoring, design, and boss updates. I think they forgot a design task here, though, for when the user fails the level, so let's add a draft task to remind them. Now, many tools hard code sub-issues or children to only support one level. But remember adaptability? With GitHub projects, we can have multiple levels. If I click into Save Score, we can see that it has its own task list. And that first task has its own set of tasks. I can traverse across this hierarchy from feature to scope to task to subtasks with ease. And the breadcrumb navigation lets me quickly go back to any level. So let's switch to our feature delivery project, which tracks the status of items about to be released. You can tell this is a different project because it has custom fields and unique views. For example, there's a progress field letting us know if anything's at risk of slipping. And even from this high-level view, we get insight into issue relationships with the tracks field, allowing us to scan for subtask progress. And if we move into our releases view, which is grouped by tracked by, we can see all the issues that roll up to a particular release. I'm so pleased to say you can join the waitlist to try this out today. And if I need to update my team's plans on the go, the GitHub mobile app now supports projects in iOS and Android, allowing me to assign items or update fields right from my phone. GitHub Issues not only adapts to your current planning processes, it encourages you and it enables you to evolve and iterate as you go. With over 100 new features and along with our new betas, now is the time to give GitHub Issues a try.
Sometimes I just want to dig right into the code to get my bearings without muddying up my local machine and cloning a bunch of random repositories. So let me show you a new code navigation experience we have in private beta to help with that. I've heard about this new fast-loading web framework, Fresh, based on Dino, but I haven't had a chance to play with it yet. Across all of GitHub, I can search by language and my keyword Dino. This chat app looks interesting, and it's based on the Fresh framework. Now, let's see if we can find this button, New Room, in the code. I type into our repository search, super fast, and look at that, there it was, so fast. Filters make it easy to find exactly what you need based on common criteria like language, path, or symbol. And we can also drill into a specific file, view symbols, and navigate to definitions and references. So now you can discover the context around the code and see answers to questions you didn't even know you had. But let's look at another tool that helps me roll up my sleeves and dig into the code, code spaces. Code spaces are powerful developer environments in the cloud, spun up in seconds and completely configured for your project. The Code Spaces dashboard has a curated list of templates to get you started quickly. Now, I've been wanting to play with Preact, but I don't want to risk breaking my local laptop installing a bunch of dependencies. Luckily, Code Spaces has already done all of the configuration for me, so I can focus on learning and building, not setup. From the Preact template, in a single click, you can spin up a pre-configured cloud-based developer environment personalized with your themes and dot files. Index.js is already open, so I can simply make a change and get tinkering quickly. And there it is. Now, it might seem like magic, but the secret is config as code. The dev container JSON file defines how your project will build, display, and run. So every developer of this repository, every user, has the same delightful experience every time. Now remember, I didn't fork Preact. Templates let me get started quickly on my next project without needing to create a fork or repository first. Speaking of my next project, I've been wanting to explore Stable Diffusion, an AI model that allows you to generate images based on a prompt, but it doesn't run on my laptop yet. Luckily, GPUs for Code Spaces are now in private preview. And not only that, I can choose which editor I use. I can now use Code Spaces in VS Code or IntelliJ on my local desktop, or I can even open in Jupyter Lab. Now, this astronaut riding on a horse was cool, but what about that rainbow corgi in space? And in just a few seconds, I'm ready to make some AI. I know, it's so cute. I am ready to make some AI-generated art powered by my personal GPU in the cloud. Okay, that's a cute corgi, right? And just the image I need. Since becoming available last year, we've heard success stories from thousands of developers using Code Spaces within teams and enterprise. But this is GitHub. We want to make the possibilities offered by Code Spaces available to every developer. So today, I am thrilled to announce that Code Spaces will be available for all GitHub users with up to 60 hours of free usage every month. So excited. The worst feeling as a developer is getting stuck before you can even get started. So use Code Spaces to get in the flow and stay there. Now I want to talk about the heart of GitHub, the open source community that powers our modern world. Open source developers build tools for the rest of us, so our job is to build the tools they need to succeed too. Over the last year, we've been hard at work to make a developer's daily community experience truly excellent. GitHub Discussions enables thousands of communities of all types to connect and build together. The GitHub profile is now fully customizable and celebrates your achievements, reflecting your unique developer life. And now, with our new privacy settings, you can control what you share online while still being able to contribute publicly to open source. And 3 years ago, we launched GitHub Sponsors
to help fund the global team of volunteers that build open source software, the ones that we all depend on. Since the open source economy on GitHub has flourished, we've doubled the number of regions served by sponsors to 68, and all of you have contributed over $25 million to open source developers and projects. That's the power of community. It's made it possible for thousands of developers to pursue their passions and contribute to open source full-time. But we often hear, more developers want to take this leap, quit their jobs, work for the internet. GitHub wants to help. And we know that we need to build an open source economy on developers' terms. So I want to discuss 3 ways we're tackling this. First, projects need durable funding over the long term, a role that companies who depend on open source can and should play. We want to lead by example here, so we're supporting our own stack. This past summer, we contributed $500,000 to the dependencies that GitHub needs to run its own software. We funded 900 people across the world and allowed them to spend more time on their projects, fixing lingering bugs, patching that security flaw, or sketching out their next release. Let's hear from some of the developers. I received the grant from GitHub around July this year, and it really motivated me to continue doing open source. It was my first sponsorship, so it really made me feel like you can do this maybe for a living in the long run, right? GitHub opening up the sponsorships is what allowed me to get noticed. P5.js is an open source JavaScript library that has more than 1.5 active million users. This is a job like 24/7. So being supported by different organizations, I think provide us the space to sometimes to take a break. Corporate sponsorships are really important. Getting that recognition as far as like my career goes, it's one of the best things on my resume, no matter what I've launched or what I've done. Nick, Chan, and Fran said it just right. Companies sponsoring open source means that many more developers can take a much needed break, branch out into a new project, or jumpstart a career. This is exactly what we want to support. And we want to give developers more options on how they fund their work. With companies like these participating in sponsors, we know we can. Which brings me to our second step. Building a career in open source is uncharted territory. Who do you talk to first? What are you asking for your sponsorship? Where should I focus? Unlike most careers, there's no predictable path to follow. Last year, we launched an experiment in India called OS Grants. We gave 15 developers a simple grant that afforded them the time to focus on building their open source projects. And the results, a year later, are fantastic. As just one example, Peter Thomas used his grant to formally work on Karate Labs, which is a venture-backed startup today. We want to expand on this program globally, and that's why I'm proud to announce the GitHub Accelerator. We're going to fund 20 maintainers that want to commit to a full-time career in open source. Starting with a 10-week program, we'll provide a cash grant and mentorship from the GitHub team, open source experts who have pioneered in this space, and enterprise sponsors, where they can build a durable set of funding for the long term. Check out the application. Yeah, we want more people in this. We'll be launching our first class early next year, so be sure to apply by December 31st. We're so excited to experiment with this creative community. Our hope is that each class blazes new paths in open source, so that in the future, many others can fork and follow. Finally, open source companies are born on GitHub every day, and they're melding together the meaning of communities and enterprises building product together. We know the power of these products, and we want to invest in this vital ecosystem. So I'm excited to announce a $10 million GitHub fund in partnership with M12. We're going to specifically focus on open source dev tools, because if we want open source to be vibrant tomorrow, we got to invest in the maintainers of today. We've already partnered with a company that showcases just what this could look like, Codesy, which maps open source and company repos so developers can confidently and automatically make changes to their code. We're excited to partner with them
and we want to see a new generation of developer tools built on GitHub. We want to give developers the choice to work on open source full-time, regardless of income, regardless of location. And we hope that today's programs, supporting our stack, the GitHub Accelerator, and the GitHub Fund, will jumpstart a thriving open source economy for projects that can be a developer's passion and their livelihood. Innovation in software happens to a large degree in the open source domain these days. You want to be part of that, you should be part of open source. If you look at a Mercedes-Benz car, it is packed with open source components. So it's just natural for us to collaborate with others, and open source is the best model to do that. In enterprise IT, we have decided to go all on GitHub because it helps us to share the code internally and work with the open source world. Everyone knows GitHub, yeah. So the biggest platform out there, and that is for us a huge advantage because we do not have to explain GitHub itself. We can concentrate on the stuff that we do with that. GitHub is for us a platform which integrates every need we have around code, around configuration, about doing our job, building the systems. So we have one platform that integrates easily and that reduces time and gives us the transparency we need. What we automated with GitHub Action is how we build the code. We do the software engineering, we test it, we simulate it, and GitHub is our core tool to make that work. Organizations and the open source community are turning to GitHub Actions to power their continuous integration and deployment workflows. In fact, over 10 million builds a day are happening with GitHub Actions across Linux, Windows, and Mac OS. So GitHub Actions is the #1 CI/CD platform, and it's more powerful and flexible than ever. So whether you're building a small personal website or a cloud-native, mission-critical enterprise application, GitHub Actions can meet your needs. And best of all, it's closely integrated with all the other GitHub features you know and love. So if you haven't used GitHub Actions yet, it may feel a bit daunting at first. So we've invested in the Getting Started experience with simple but powerful starter templates. But notice these templates don't simply build and test my code. They can also automate security analysis or deploy my app to more than a dozen different cloud services like AWS, GCP, Azure, and more. Now, templates are great for getting started, but let's be honest, how often are you starting from scratch? It's much more likely that you've already got some other CI/CD system in place, maybe under somebody's desk or somewhere else. Now, understandably, the thought of doing it all over again in a brand new platform is not an attractive prospect. So to help with this, we've been working on a new tool called GitHub Actions Importer. With GitHub Actions Importer, we can help you not only migrate your company's automation to GitHub Actions extremely quickly, but more importantly, plan and scope the effort required to do so, and even help estimate your usage based on analyzing your existing platform use. We've already been using it with large enterprise customers that have particularly complex migration requirements, and so far we've had some great success. So far, we've seen that about 90% or more of workloads have been migrated automatically with GitHub Actions Importer. So we're really excited to start rolling that out more broadly in the coming months. So as you build up your DevOps capabilities with GitHub Actions, you'll find that your workflows will grow and become more complex. And in an organization, you want to have a common, repeatable way that applications are built, tested, and deployed. Reusable workflows mean you don't need to repeat yourself, and you can easily maintain consistency. For example, let's say I want to add a new staging environment between testing and production, but make sure that I'm deploying in exactly the same way as I will when we go to production. To do that, I can add a job to deploy to staging and simply point to the reusable workflow I already use to deploy to my production environment. This means I can guarantee the exact same behavior when deploying to both staging and production, and ensure there's no room for configuration drift or all of that copy-pasta logic. I can also call this reusable workflow from other repositories in my organization, or even other organizations. And all this means that I can trust that each deployment is doing the right thing every time.
Now, another way that teams can control quality is with pull requests. You can now use GitHub Actions to deploy each pull request to its own temporary review environment. And this enables the team to easily see and interact with the changes before approving, of course, and kicking off your production CI/CD process. Now, of course, before that deployment actually gets in front of customers, you want to make sure that everything looks right. So here, we're using environment protection rules to gate a deployment to production until an appropriate person approves it. This gives us a chance to do a final check or just get sign-off before going live. Now, you can also set environment protection rules to restrict which branches can go to each environment. So you know that only your release or main branch can ever get to prod. Or you could just delay the deployment for a period of time. And it looks like this one's been approved by Thomas. Cool. Thanks, boss. In the past, you could only choose the operating system for your hosted build machines. But sometimes you want a little bit or a lot of extra power. So now you can take advantage of larger hosted runners in GitHub Actions. These runners let you build in Linux and Windows and provide compute with up to 64 cores and 256 gigabytes of RAM. Wow. One customer, Dagger.io, managed to reduce their build times dramatically just by moving to more powerful hosted runners, more than paying for itself. We have also partnered with ARM to make IoT development even easier. I'm pleased to announce that the ARM development tools, including the cross-compiler and ARM virtual hardware, are now available natively inside GitHub Actions hosted runners. So you really can build and deploy in any environment, from IoT to quantum computers to the largest cloud environments in the world. GitHub Actions can help you build, test, and deploy reliably and securely. So GitHub Actions is more powerful than ever, which is why organizations like Mercedes, KPMG, Dell, Shopify, and many more are using Actions to power their builds and deployments. And last year, we donated over 7 billion minutes of GitHub Actions to open source. So whether you're deploying a blog to GitHub Pages, or you're an open source maintainer who needs automated testing, or maybe you're the CTO of a Fortune 500 company who wants a reliable CI/CD solution, GitHub Actions is the answer. GitHub Enterprise brings all of these features, like actions, code spaces, advanced security, and issues, into that complete developer platform, backed by the security, auditability, and compliance features that companies need, with that developer experience that you already know and love. You can self-host it with GitHub Enterprise Server, or increasingly have us take care of that for you with GitHub Enterprise Cloud. Now, I recognize quite a few faces in the room from the startups and enterprises that I talk to every day. And you consistently tell me that you're trying to innovate quickly and safely. You're trying to onboard developers and integrate new teams through acquisitions and partnerships fast. You want to give those teams freedom to work the way they want, but also have confidence that your company's billing and security policies are applied consistently everywhere. The GitHub Enterprise account is designed to help you strike that right balance. Developers can work their way, while you, administrators, have full control over policies, like requiring that everyone has 2FA enabled across your organizations. In the last year, we've also made it easier to move independent GitHub organizations into a single enterprise cloud account. So even as your company is growing through things like acquisitions, you don't need to try to spin 9 plates at work every day. You can just spin one with one enterprise account. One plate you might not want to spin at work every day is also worrying about how you give access to the right people, to the right projects, from the right places. And that gets all of the more important, and let's face it, harder, as companies are moving to the cloud with teams working from anywhere. To help you manage that, GitHub Enterprise integrates directly with the identity providers you already use, such as Okta and Azure Active Directory. And now you can use them to provide developers with a dedicated GitHub account just for work that doesn't affect their personal account at all, with enterprise managed users. In just a year since launch, almost 1,000 companies have adopted enterprise managed users.
And we've recently added the ability for you to apply IP address access rules directly from your identity provider over those accounts. So your GitHub Enterprise Access policies are always going to be up to date with your company. But, you know, as Thomas said, to build faster, you do need the tools now that empower your teams whilst also securing your most valuable assets. With GitHub Enterprise Cloud, you get access to our newest features as soon as they're released. Features like the new fine-grained personal access tokens that massively reduce the surface area of credential leaks by empowering developers with individual repository targeting and over 50 fine-grained permissions, and organization administrators with full control over what access is approved. Or the ability now to track all of those tokens in your enterprise audit log. So if one is leaked, you can see exactly what it's been used for. So that is GitHub Enterprise Cloud. But if you're using Enterprise Server, we've also been shipping hundreds of these features every year to our self-hosted instances, and we're adding even more. Today, I'm pleased to announce the release of GitHub Enterprise Server 3.7. This release includes over 70 new features, like enhancements to reusable workflows with actions, so it's easier to deploy actions at scale with standardized workflows. New enterprise inner source policies that make it easier to collaborate across teams no matter what your compliance needs are. And feature 3 of 70, I promise I'm not actually going to list all 70, the launch of the security overview dashboard for all enterprise customers. So every company and security team can get a single view of risk across your enterprise. So whether you choose to self-host or join us in the cloud, GitHub Enterprise is the best tool to innovate and operate however your business demands. Security can be complex, but as a GitHub Enterprise user, it doesn't have to be. You can embed the best security tooling directly into your development processes. GitHub Advanced Security empowers developers and security teams like you at over 1,400 companies to build securely by default, right where you're already planning, collaborating, and shipping code, all in GitHub. One of the hardest things about keeping your code secure is the constantly changing attack surface. The software supply chain is the largest attack vector today. Without insights into your code, you may never know that you have vulnerabilities in your dependencies. Dependabot makes this easy. It automatically notifies you of security issues in your code so you can quickly merge to the latest safe version. In 2022, developers updated 50% more vulnerable packages than in 2021, helping to secure 18 million projects in GitHub without the hassle of manual steps. But what about your credentials? Credential breaches are emerging as the most costly attack vector we're facing. That's why we built secret scanning. When we identify a secret, we walk you through how to take an action, like how to remediate or flag a false positive, and you have complete visibility into each secret found. You can even create your own custom patterns to detect secret patterns unique to your organization. But if you're a little lazy like me and also risk adverse, and you want to stop secrets from ever entering your code, you now can, thanks to push protection. No matter where you're working, potential secrets can be blocked before they make it into your code. And if you accidentally push a secret into GitHub, we give you the option to remove it or let your security team know why it should be there. Last month alone, push protection stopped over 1,000 secret leaks, saving teams like you thousands of headaches and thousands of hours on triaging, rotating, and remediating secrets. But what about those unknown vulnerabilities in your code base? With CodeQL, you have a widely adopted solution with a large open source libraries of queries to detect security issues in your own code. Companies like Bloomberg, Uber, Microsoft use CodeQL within their own code, and they share their queries back with the GitHub community. CodeQL already supports some of your favorite languages like Java, C++, Go, and JavaScript. Today, we're making support for Ruby generally available. And at GitHub,
we don't just build our security tools, we use them too. Powering the GitHub website is mostly written in Ruby. So we use CodeQL on our own code base. With CodeQL, we've been able to remediate dozens of potential vulnerabilities in just a few weeks and kept far more from entering our code. For developers or security teams whose responsibility spans across hundreds or thousands of repositories, we're here for you too. We're committed to continuing to support you in improving your security posture across all detection types. Security Overview provides you with actionable feedback and insight across every repository you have. I'm excited to announce we're deepening the Security Overview experience with new dashboards on risk and adoption, giving you more insights into your risk posture and highlighting areas that you might be vulnerable because you don't have security features turned on. With this information, you can take action on what matters most to your organization. But it's no longer our own software we have to care about. The world has never been more interconnected. The security of our business's software and the security of open source software has never been more deeply intertwined. That makes every piece of software important. And that means we all have a role to play in keeping open source software secure. That's why in public repositories, we scan for leaked secrets and help to revoke them. Why we provide code scanning via CodeQL for free. Why Dependabot will always be forever free for all repositories and all users. That's why Security Lab researchers will continue to publicly share all discovered vulnerabilities within our open source advisory database. But we still need to do more for open source maintainers and security researchers. Today, I'm pleased to announce private vulnerability reporting. It's a game changer. Maintainers and security researchers together play a critical role in keeping open source secure. It can be really difficult to responsibly share vulnerabilities found in a public project, and we want to make that easier. With private vulnerability, people can now privately disclose vulnerabilities to just the maintainers of the open source project. Together, you can now find a fix, remediate, then publish your CVE, all within GitHub. This dramatically reduces the burden on open source maintainers who are volunteering their time and skill to run our open source projects. Developer and security teams no longer should compromise on agility or need to use out-of-sync tooling to secure their code. With GitHub Advanced Security, security can be something that enables you to ship quickly and with confidence. This was amazing, right? Woo! 15 years ago, the first line of code was committed to build GitHub, the initial commit. And since then, we've always had one purpose, to put the developer first. Over the years, through every iteration, from the pull request to Copilot, this has remained our mission. Because putting the developer first also puts everybody first who depends on a developer. And 15 years later, we have arrived at the moment where this is more necessary than ever. Today, you have seen our biggest innovations yet across the entire developer lifecycle. From picking up your first task in issues and projects, to booting your dev environment in code spaces, and then in your code editor, using Copilot to write code more efficiently, to then even using your voice with Hey GitHub. And when you're done with coding, it goes to submitting your pull request, securing your code with advanced security, automating everything, not just CI/CD, everything with actions, to pulling in more than 15,000 integrations from our marketplace. Integrations with the whole developer ecosystem and all of our partners. And through everything, collaborating with the open source community who empower us all. And all these things standing on their own would have seemed like science fiction, like Star Trek, just 15 years ago. But it's what all these innovations are designed to achieve together that is most important to us.
Like we've always done, we built this new developer experience, this one integrated platform for one single purpose, to put the developer first. Because ultimately, developers will build their best when they have one single place to do it all. One place with everything developers need to be creative, to be happy, to build a better, more brilliant tomorrow for everyone. And GitHub is this one place, the only place where this is truly possible. Thank you so much for being here today, and thank you even more for coming on the journey ahead with us. Have a great universe, and let's build from here. ओके सो काहूट का किन किन लोगों को पता है? जिनको नहीं पता जस्ट राइज योर हैंड ताकि मैं उनको बता दूं, और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। काहूट की जो है स्लाइड जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। Okay, so Jameel, let me confirm that my screen is visible or not. ओके सो मैं काहूट के बारे में बता दूं कि काहूट के अंदर जो है आप सबसे पहले तो अपने ब्राउज़र में चले जाएं और उस पर लिखें kahoot.it, ठीक है। और उसके बाद में जो आपकी स्क्रीन पे पिन शेयर हो जो नज़र आ रही है ना, मैं भी इधर कमेंट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको जो है ना अपने जब आप kahoot.it पे जाएंगे और उसके बाद आपके पास पिन का ऑप्शन आएगा, आप जो है वहाँ ये पिन लगाएंगे, ठीक है। और वो आप हमारे पास काहूट में ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो काहूट में ऐसे होता है कि हम जो है अपना जो क्वेश्चन आंसर है Q&A, तो वो आप जो है उस MCQ, सॉरी माय बैड, MCQ, तो वो हम उसके अंदर होगा। और उसके अंदर सीन ये होता है कि जो सबसे पहले सही जवाब देगा ना वो जीतेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो जो है मुझे कमेंट में बता दे। वी विल स्टार्ट इन 7:55, ठीक है। जब तक ज्वाइन हो जाए देखते कौन कौन ज्वाइन कर रहा है हमें। ओके, मुजम्मिल हुसैन आ गया है, तमीम है, उल्फत सईद है, अभी है मोहम्मद अरसलान, ठीक है, मोहम्मद अरियान। जस्ट हम 2 से 3 मिनट वेट करते, 4 मिनट वेट करते हैं, हमारे पास पार्टिसिपेंट आ जाए। वी विल स्टार्ट दैट काहूट, ठीक है। ओके, हमारे पास पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। रिजवान करोई, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बैड प्रोनाउंसिएशन। अमीर अवेश अली, सी आर कहाँ से? जोबिया, रिजवान, ठीक है। आसिल, वेलकम आसिल। युसरा, ओके, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? लेट मी इन्फॉर्म, या मैं इसकी साउंड थोड़ा सा बंद ही कर दूं? जमील, व्हाट यू थिंक अबाउट? Hello, Jameel. Am I audible or not?
ओके वी आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। या 55 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी विल वेट फॉर यू। क्या नाम है? शनम। ओके दैट्स ग्रेट। ओके सो सारे काहूट में आ गए या कोई रहता है? जस्ट लीव द मैसेज इन द चैट, तो हम जो है आपके लिए रुक जाएंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट दिस काहूट, ठीक है। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, हु इज द सीईओ ऑफ गिटहब? थॉमस लुइस, थॉमस डॉम, ये पता नहीं क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती। याद रहे जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो ही विनर होगा, अदरवाइज भले सही सही जवाब दे लेकिन वो सबसे पहले दे, ठीक है। और हर सवाल जो एमसीक्यू है वो 20 सेकंड का है। ओके ठीक है, हमारा एमसीक्यू जो है वो, मतलब हमारा इवेंट है, सही सुना है, 6 बंदे, ठीक है। लेट्स सी कौन सबसे पहले। Okay, we have top on date Muzammil Hussain, after date Rajab Ali, after date Arslan, Aryan, Ulfat Said, ठीक है। Let's see next. Okay, so next quiz is, in which month GitHub Universe Conference held in this year? इस साल GitHub Universe Conference कौन से महीने में हुई? Maybe अक्टूबर, maybe सितंबर, or maybe नवंबर, या maybe none. Let's see. Okay, ठीक है। Let's see कौन। Okay, Ulfat Said on the third, Arslan on the second, Muzammil top पे है। After that we have Rajab and Suhail. Okay, let's check. Okay, Copilot invented by which company? Microsoft, Codespace, GitHub या Visual Studio? Maybe Microsoft या Codespace या maybe GitHub, Visual Studio भी हो सकता है। ओके ऑलमोस्ट सभी सही हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, को पायलट किसका है। ओके अरसलान ऑन द टॉप, सेकंड इज मुजम्मिल हुसैन, थर्ड वन इज उल्फत सईद, रजब एंड सुहेल। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट। ट्रू और फॉल्स, इज गिटहब यूनिवर्स हेल्ड एवरी ईयर? ट्रू और फॉल्स? ये तो आसान सा सवाल है, मैंने तो ये बताया है पूरे इवेंट में बहुत दफा।
ओके, आई एक्सपेक्टेड दैट, ये गलत है, ठीक है। लेट्स सी हु इज ऑन द टॉप। ओके, अवेश वी आर ऑन द लिस्ट, ठीक है। रजब अरसलान अभी भी टॉप पे हैं। वी हैव मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन ऑन द सेकंड, उल्फत ऑन द थर्ड, रजब ऑन द फोर्थ। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। True or false? Is GitHub open source? Is GitHub is open source community? True or false? True, ठीक है। हमारे पास वही डैशबोर्ड है। Let's go to next. Where did the GitHub Universe conference take place this year? यूएसए में भी हो सकती है, यूके या सैन फ्रांसिस्को या मेबिनन। लेकिन मैंने इवेंट में ये आई थिंक नहीं बताया, तो जिसको पता होगा गिटहब कॉन्फ्रेंस इस साल कहाँ हुई थी तो उसे पता होगा। लेट्स सी। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में आई सी कंफ्यूज थे क्योंकि ये मैंने बताया ही नहीं था, ठीक है। लेट्स चेक। ओके, उल्फत सईद ऑन द सेकंड, मोहम्मद अरसलान ऑन द फर्स्ट, रजब अली, अवेश सीआर। ओके, सीआर आ रहा है। मुजम्मिल हुसैन, क्या हुआ मुजम्मिल? अच्छा, मैंने बताया नहीं था, हाँ ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। Is Microsoft is the owner of GitHub? यार ये तो पता होना चाहिए। गिटहब पहले कंपनी बनी थी लेकिन अब वो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली है, ये तो सबको पता होना चाहिए। लेट्स सी द डैशबोर्ड। ओके, नो चेंजेस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव 3 क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन remaining. How many hours code space offering free service to developers? Let's check. ओके, ये तो मैंने बताया भी था, डेवलपर्स को जो है 60 आवर्स पर मंथ मिल रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था सबका आंसर सही हो। लेट्स सी हु इज ऑन द टॉप। ओके, एवरीबॉडी इज ऑन द टॉप, ठीक है। रजब, ओके ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। कैन आई यूज कोड स्पेस विथ माई टैबलेट, आईपॉड और आईफोन? ये तो मैंने बताया था, ये तो बहुत आसान सवाल है और आई एक्सपेक्ट सब इसको। आई थिंक मैंने 20 सेकंड का किया हुआ है, मेरी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा वो गूगल भी कर सकता है, लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया। लेट्स सी। या आई एक्सपेक्टेड दैट सबका सही होगा और सबका सही है, ठीक हो गया। ओके, लेट्स सी हु इज ऑन द टॉप। ओके, वी हैव ऑन द टॉप अरसलान, उत्पत, सईद, रजब अली, सिया एंड मुजम्मिल हुसैन। Go to next slide or next quiz. Last one. How many speakers was present in this GitHub watch party? ये तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तुक्का लगाओ, तुक्का। जिसका तुक्का सही लगे, मे बी 7, 8, 9, 10। ओ, सबने तुक्का ही लगाया। लेट्स सी किसका सही आया है। ओके ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। वी हैव मोहम्मद अरसलान फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जो है उल्फत सईद, थर्ड वन इज अवेश अली सिया, एंड रनर अप भी आए थे। ओके, सो वी विल चेक, टेक इट स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक वेयर इज माय, ठीक हो गया, मैं स्क्रीनशॉट, ठीक हो गया। ओके, सो इसको बंद कर दो, लेट इंट
ठीक है, तो जी कौन जीता है? राइज योर हैंड। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, एक मिनट। पोजीशन होल्डर जो कि रनर अप थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जस्ट राइज योर हैंड। ओके मोहम्मद अरसलान, राइज योर हैंड, ठीक है। तनसुख, जन्म, ओके जो जो जीता है ना, जस्ट कमेंट के वो कहाँ कहाँ से। आई थिंक मोहम्मद अरसलान था, मैं इसे नहीं जानता। तो अरसलान जस्ट, और सादिया सईद, सादिया था, क्या नाम था उसका, उल्फत सईद, ठीक है। और थर्ड वन इज अवेस अली सीआर। तो जस्ट कौन कहाँ से, जस्ट कमेंट इन द कमेंट इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग। और हाँ, मैं जमील अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दें, ऑल द पार्टिसिपेंट टू फिल दिस अटेंडेंस फॉर्म, ठीक है। आप, हम आपको इसके थ्रू जो है सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करें, जल्दी सभी जो है इस लिंक पे क्लिक करें और अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दें। और जिन्होंने जो भी प्राइज विन किया है वो जो है अपने उसी नाम के थ्रू जो है वो क्या बोलते हैं, अटेंडेंस फॉर्म में जो है अपना फॉर्म फिल कर दें। वी विल कॉन्टैक्ट यू विथ थ्रू यूर ईमेल, ठीक है। ओके, अवेस अली फ्रॉम यू टेजा क्लब, मोहम्मद अरसलान इज फ्रॉम, आई एम फ्रॉम एस एस यू ई टी, एस एस यू ई टी बोले तो सर सैयद, या। ओके, रजब, रजब आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ फ्रॉम म्यूट जामशोर। ओके रजब, अगर हमें लिंक्डइन प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलता है सो वी विल कांटेक्ट यू एंड यू, आपको जो है हम लिंक्डइन प्रीमियम देंगे, ठीक है। और बताएंगे भाई कैसा था ये काहूट, किस किस को पसंद आया, क्वेश्चंस वगैरह मैंने आसान रखे थे या मुश्किल थे, बस मुझे बताएं। हाँ रजब, आपको अगर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट अगर हमें प्रोवाइड करेगा। शेयर द लिंक, जमील ने शेयर लिंक कर दी है। जमील, लिंक जो है हमारी लिंक्डइन की और जो हमारे पेज की है वो भी शेयर कर दें। आप सभी जो है हमारा फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो भी आपको जहाँ से एक्सेसिबल हो, हमारे पेज को जो है लाइक कर लें, उसे फॉलो कर लें, ताकि जो है आपको हर अपडेट मिलती रहे रिलेटेड टू अवर इवेंट, हम जो भी करवा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो हैंडल्स हैं लिंक्डइन के वो भी जमील आपको सेंड कर रहा होगा। यू कैन शेयर योर ओन लिंक्डइन के हैंडल्स, ताकि जो है हम आपसे कांटेक्ट करें दूसरे बच्चे, ठीक है। तो हाँ, इफ यू हैव यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर। मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई भी सवाल है यू कैन आस्क द क्वेश्चन थ्रू, ठीक है। मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ सबसे पहले तो सभी के हैंड्स लोअर, एक मिनट एक मिनट, एक लोअर हैंड, I hope you need a lower hand. I can't sign in. I can't sign in. अच्छा, हाँ जो सबसे टॉप पे आया है ना उसे गिटहब की हुडी मिलेगी। डिपेंड्स ऑन के माइक्रोसॉफ्ट हमें अगर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम उनको ये इवेंट भेजेंगे और वो अगर हमें प्रोवाइड करते हैं सो वी विल गिव द गिटहब हुडी टू द टॉपर, जो कि आई थिंक अरसलान था, ठीक है। तो अरसलान को जो है गिटहब की हुडी मिलेगी। अगर वो नहीं देते तो हम लिंक्डइन प्रीमियम तो हम उन्हें देंगे। अगर वो बोलेंगे कि भाई हम उन्हें एक्सबॉक्स का वाउचर चाहिए तो हम उन्हें एक्सबॉक्स का वाउचर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। अगर किसी को कोई, आई एम जुबैर फ्रॉम अनदर आईडी हसनैन। ओके जुबैर भाई, कैसे हैं आप? जस्ट किडिंग। अगर कोई इशू आ रहा है, अगर लिंक्डइन प्रीमियम कितने मेंबर्स को मिलेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन के माइक्रोसॉफ्ट हमें किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेशन अटेंडेंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास ओवरऑल 50 अटेंडेंस है तो वो हमें 5 देगा, अगर 40 है तो वो हमें 4 देगा, 30 है तो 3 देगा, ठीक है। डोंट हैव परमिशन टू व्यू रिस्पॉन्ड दिस फॉर्म।
जमील कैन यू प्लीज चेक दिस इशू, ठीक है, एक्सेस नहीं है हमें, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना फॉर्म शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें। मैं बस अपना, अगर जमील कैन यू प्लीज चेक दैट एक्सेसिबल है नहीं है, या आप सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दें। हाँ, ट्राई करके देखिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, वी विल हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। जमील आई थिंक वापस से जो है फॉर्म शेयर कर दें, शेयर फॉर्म की लिंक वापस से जो है शेयर कर दें, ठीक है। आई थिंक आपने वो जो है जो ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्ट किया हुआ होगा, आप जो है उसे एवरीवन कर दें। तो स्टिल नॉट वर्किंग, ओके जमील कैन यू प्लीज चेक इट आउट, लेट मी चेक इज दैट वर्किंग और नॉट। अब हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, मेरे पास भी चल रही है अब। ओके, सो रिएक्शन शेयर कर दे, अगर किसी की कोई सवाल है तो वो जो है कोई रिएक्शन दे दे, राइज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आप इधर बोलना चाह रहे हैं, तो वी विल अनम्यूट यू, जस्ट राइज योर हैंड और गिव सम रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई और मैसेज देना है, वी विल मोस्ट वेलकम यू। अब वी गेटिंग सर्टिफिकेट, हाँ इसीलिए हम अटेंडेंस फॉर्म फिल करवा रहे हैं। क्या नाम है, शनम, या प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो माइंड नहीं करना, हम इसीलिए अटेंडेंस फॉर्म फिल करा रहे हैं। इसके अंदर जो आप ईमेल देंगे और जो आप नाम देंगे ना, ठीक है, हम उसी नाम से उस मेल में जो है वो सर्टिफिकेट मेल कर देंगे, ठीक है। तो वो आप जो है आपको लिंक्डइन पे लगाना है, और हम आपको उसके अंदर जो है जो थोड़े से रूल्स होंगे कि भाई आपको ये हैशटैग्स वगैरह लगाने, और आपको लिंक्डइन पे लाजमी उसे शेयर करना है, और हमें मेंशन करना है हमारे जो पेज को, तो वो आपको करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ठीक है। अगर किसी को कोई भी सवाल है, यू कैन राइज योर हैंड, ठीक है। अगर किसी कोई बोलना चाह रहा है तो वो आ सकता है, हम कोई इशू नहीं है। ओके, कौन, K20SW004, ओके आई विल अनम्यूट यू, जस्ट कैन यू ऑल्सो प्लीज टेल अस इफ वी बी गेटिंग, लेट मी check, if we getting any more certified courses, yeah you can get certified courses। आप जो है माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग, अरे मिनट जो 2 मिनट 04, ओके। तो मैं फॉर्म बात कर रहा ओपन नहीं था, हो रहा, फॉर्म ओपन हो रहा है तो उसमें डिटेल्स डाल दें। हेलो एक्सक्यूज मी, ओके जी 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 बोलें। फॉर्म ओपन तो हो गया है लेकिन उसमें डिटेल करना है, वेंट रॉन्ग ओके लेट्स सी जमील, या फॉर्म की। ओके एक मिनट हम चेक करते हैं, ठीक है। जमील कैन यू प्लीज सी दैट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट वगैरह इसी पे ही मिलेंगे। नहीं तो मैं अपना एक फॉर्म शेयर कर देता हूँ जमील, इफ यू, अगर आप मुझे इजाज़त दें। हाँ, तो मैं शनम, आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके जो है सर्टिफिकेशन वगैरह, यस वर्किंग नाउ, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी एज़्योर के साथ इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है एज़्योर की माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्कशॉप वगैरह कराता है। आप लिखेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनेट पे, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर आप वो अटेंड करेंगी, और उसके बाद वो आपको फ्री में वाउचर देंगे कि आप जो है एज़्योर की सर्टिफिकेशन वगैरह फ्री में मिल सकती है, और जिससे आपका जो है क्लाउड वगैरह का एक्सपीरियंस बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो हम आपको लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम अगर आपको मिलता है, आप या अगर ये जो जीते हैं जिनको लिंक्डइन प्रीमियम मिलेगा, तो वो लिंक्डइन जो लर्निंग है उसके थ्रू भी जो है सर्टिफिकेशन जो वगैरह जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे यूडेमी हो गया, उधर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल रहे होते हैं।
जो कि सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है। तो बाकी गूगल की स्कॉलरशिप आई हुई है, ठीक है, जो कि IRM प्रोवाइड कर रहा है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप जो है वो वाले प्रोग्राम करें। आई थिंक 6 सर्टिफिकेशन जो है वो दे रहा है। इज दैट लिंक इज वर्किंग, फॉर्म लिंक इज वर्किंग और नॉट? किसने बोला था? रजब, काम कर रही है नहीं कर रही? प्लीज शेयर द लिंक गूगल सर्टिफाइड कोर्स इफ यू कैन। अभी तो मैं शेयर, क्योंकि लेट मी चेक। बाकी आपको मैं अपनी लिंक्डइन की आई थिंक जमील ने शेयर की होगी, मैं रीशेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप जो है मुझसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लें, आई विल गाइड यू, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है। मैं इधर देखता हूँ, अगर मेरे पास है, मैं गूगल करता हूँ, तो मैं आपको जो है लिंक्डइन सर्टिफिकेशन कोर्स की जो है लिंक, लिंक्डइन कह रहा हूँ, कौन सा कोर्स है, गूगल का जो कोर्स है उसकी लिंक जो है मैं शेयर कर देता हूँ। वो दरअसल, हाँ, कनेक्ट विद, ठीक है। तो आपको जो है उसके अंदर वैसे वो कोर्स पेड है, ठीक है। अगर आप कोर्सेरा पे वो कोर्स हैं, वो कोर्स पेड है, ठीक है। लेकिन गूगल रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो बाद में ओपन कर देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन आई थिंक 15,000 बंदों की हो गए होंगे, मैं भी, या जब भी आती है तो यू जस्ट कनेक्ट मी, आप जो है मैसेज कर दे, जब भी आती है आई विल कॉन्टैक्ट विथ यू, ठीक है। ओके, K1901, ठीक है। तो अगर आप ने अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दिया है, तो यू कैन गुड टू गो, ठीक है। आप जो है इसे लीव कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ दे विल वेट हेयर और अटेंडेंस फॉर्म फिल करके जाएं। अच्छा, जिसका फॉर्म फिल नहीं हो रहा, ट्राई टू रीच जमील, ठीक है। जमील की लिंक इधर इधर है, आप जो है अभी मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप जो है जमील को इस लिंक पे लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करें, ठीक है। आप उसको बताएं कि भाई फॉर्म जो है फिल नहीं हो रहा था, तो आप जो है हमें इधर हमसे जो है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जमील से कांटेक्ट करें जिनका जो है फॉर्म फिल नहीं हो रहा, ठीक है। जमील जो है आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा।